बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक 7 मार्क क्वेश्चन जो कि हाजी शरीयतुल्लाह से रिलेटेड है। हम वो उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसकी रीजनिंग जो है वो स्टार्ट की जाती है। देर नहीं करते, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड हाजी शरीयतुल्लाह फाउंड द फराइजी मूवमेंट? ही विटनेस्ड डीप स्पिरिचुअल deviation and superstitious local practices among Bengali Muslims who had strayed from the core teachings of Islam due to long, close cultural interaction with regional Hindu tradition. He was deeply interested by the extreme socio-economic oppression and physical mistreatment of impoverished Muslims peasants by healthy Hindu landlords and powerful British indigo planters. Following his extensive studies in Mecca, he believed Bengal had become a Darul Harb under British control, making it essential to reform society and refocus Muslims strictly on fulfilling their Faraiz religious obligation. So ये मेन 3 रीजन है जो इस क्वेश्चन के सिलसिले में आप डेवलप कर सकते हैं कि ये रीजंस थी जिसकी बिना पे हाजी शरीयतुल्लाह ने जो है फराजी मूवमेंट स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द फ्राइजी मूवमेंट इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम? अच्छा, उसके रीजन हम क्या डेवलप कर सकते हैं? इट सक्सेसफुली रिस्टोर्ड स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड इस्लामिक आइडेंटिटी अमंग बंगाल्स हाईली नेग्लेक्टेड मुस्लिम पॉपुलेशन बाय फोर्सफुली एलिमिनेटिंग अन-इस्लामिक customs and strictly emphasizing the mandatory pillars of faith. It provided a vital united front of marginalized Muslim peasants, giving them the organizational power and moral courage to actively resist illegal financial extortions, and oppressive laws imposed by Hindu landlords. It sowed the early seeds of political consciousness and collective self-reliance in Bengal, directly laying the foundation for the future Muslim political awakening and statehood movements in East India. यानी ये 30 रीजन जो हैं वो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट क्यों की थी और उसके बाद मुसलमानों के लिए जो है वो फ्राइजी मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हिंदू लैंडलॉर्ड oppose the Faraizi movement? The movement strongly encouraged Muslim peasants to refuse to pay excessive, arbitrary, and highly exploitative taxes imposed by the landlord, directly threatening the financial wealth and economic monopoly of the elite Zamindars. Haji Shariatullah's emphasis on Islamic equality and unity threatened to break the traditional centuries-old social submission and feudal control that wealthy landlords exercise over the lower classes of society. Under Dodu Mia's leadership, the Fraizis established highly disciplined peasant defense squads, lethals, to protect rural communities, directly challenging the private militarized and physical dominance of Hindu landlord. यानी अब इसमें तो सिंपल सी बात है कि वो सदियों से हिंदू लैंडलॉर्ड जो हैं वो जो मुस्लिम जो पीजेंट्स थे उन पर मुजालिम कर रहे थे और उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फ्राइजी मूवमेंट की वजह से उनका होल्ड जो था वो खत्म होने लगा, जो कि उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द फ्राइजी मूवमेंट centered in East Bengal? East Bengal was Haji Shariatullah's native home, making it the natural starting point for his mission. After returning from Arabia, where he witnessed the profound spiritual neglect and religious decay of his own people, the Muslim demographic in East Bengal was heavily concentrated with extremely poor, uneducated farmers who were disproportionately subject to intense economic hardships and mistreatment by local elite classes. Uh, the the riverine, geographically isolated terrain of East Bengal allowed the Frizis to effectively organize, preach, and shelter their key leaders safely away from immediate surveillance of main British colonial सेंटर। यानी अब इस क्वेश्चन की जो है फ्राइजी मूवमेंट जो है वहाँ क्यों स्टार्ट की गई, उसकी बुनियादी वजूहत जो है वो इस क्वेश्चन में दी गई हैं कि नंबर एक तो उनका अपना घर था, अपना एरिया था, जिसकी वजह से उनको महसूस हुआ कि अपना जो मूवमेंट है वो अपने इलाके से ही स्टार्ट की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड दोदू मियां एस्टैब्लिश द हल्का सिस्टम? He needed a highly organized parallel administrative network to efficiently
govern, communicate with the and rapidly mobilize the expanding Faraizi communities across the vast scattered rural district of East Bengal. The system allowed the Faraizis to establish their own local courts, resolve civil and criminal disputes internally, and bypass the deeply biased, expensive, and corrupt British colonial legal system. It acted as a highly centralized tax and welfare collection agency, creating critical public funds to defend oppressed peasants in major court cases and to financially support poor families during periods of conflict. तो बेटा ये आपके 7 मार्क क्वेश्चन पॉसिबल 7 मार्क क्वेश्चन है। इस तरह जो इतने अगर कोई और भी आते हैं तो आप उनकी रीजन इस तरह से डेवलप जो है कर सकते हैं, और इस तरह अगर आप 3 रीजन डेवलप करेंगे तो आप उसमें 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स जो हैं वो बहुत आराम से हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला 14 मार्क क्वेश्चन जो हैं हाजी शरीयतुल्लाह से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।